Yeah, good morning, everyone. I'm Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon, in Applied Science Department. I'm teaching you in semester 2 Probability and Statistics in branch Computer Science and Engineering. Today's topic and subject name is Probability and Statistics. Today's topic, Bayes theorem and its questions. Okay, Bayes theorem is also called sometimes total probability theorem. Okay, so let's start. In previous classes, we have discussed probability and some questions of probability and conditional probability. It's a special case of conditional probability. Suppose that theorem. Let's start. This is your E1. Suppose this is your a set S, and I have taken a set A. This one is a set A. Understood? This is your set A. Understood? I have taken E1 set subset E2, E3, E4, E5, E6, etc. E1, En तक. Okay. Then set A. Suppose that Bayes theorem होती क्या? Let theorem क्या है? Let E1, E2, En be mutually exclusive and exhaustive event. Because we know that mutually exclusive and exhaustive events क्या था? करा था हमने events of a sample space S. Now let A be a events. Let A be a event of S. This is not event. This is event of S. Understood? Let A be a event of S. Then probability of EI does not equal to 0. Means probability of किसी भी event की, that is E1, E2, E3, En does not equal to 0. That 0. Then probability of A is equals to summation of I equals to 1 to n probability of A intersection EI. Understood? Then prove that probability of A is equals to summation of A intersection EI, because we know that from conditional probability, as we have discussed in previous class, that probability of A intersection B is equals to probability of A where B already occur into probability of B. From that one, we are here taken here I equals to 1 to n summation probability of A where EI occur into probability of EI. Okay, now proof. This is your sample space. Let's take a set A and sample space के subsets E1, E2, E3, E4, E5. Okay, then A is equals to A set is equals to A का कुछ part E2 में भी है, E4 में भी है, EI में भी है, E5 में भी है. मींस सारे सेट्स में कुछ होगा. Then A is equals to A intersection E1. If I'm talking about A intersection E1 तो A का ही पार्ट आएगा. यूनियन A intersection E2 सिर्फ इतना पार्ट आएगा. Union A intersection E3. When we intersected all parts and taken union of all that one, then we found A, then A equals to A intersection E1, union A intersection E2, union A intersection E3, and so on. The probability of A is equals to, now take the probability on both sides, then probability of A is equals to probability of A intersection E1 union probability of A intersection E2, that does union A intersection En, using additive property, because we know that we have discussed in previous lecture, if probability of union of AI, then that is less or equals to probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3 plus probability of AN. That means you can write that probability of union of AIs is equals to, is less or equals to probability of summation of probability of AI. Understood? Okay. Now using that property, because it's a mutually exclusive and exhaustive event, that means A intersection E1 intersection A intersection E2 is 0, because E1 E2 are mutually exclusive. Just look at this one. E1 और E2 में कोई भी part common नहीं है. That means E1 E2 are mutually exclusive and exhaustive also, so that this summation means this user means probability of A union B का formula क्या था? That is probability of A plus probability of B. Using that one, we can write that probability of A is equals to summation of I equals to 1 to n probability of A intersection EI. It's a now using the formula of conditional probability. It's a
फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मींस अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो दिस इज आई समेशन ऑफ i1 to n probability of a intersection ei. Now conditional probability, that is probability of ei from of any event, probability of any event where a already occurs. That means probability of ei intersection a upon probability of a. That means probability of ei where a already occurs into equal to probability of ei intersection a upon, now put the value of p probability of a, that is a summation of p of ai into p of ei. अंडरस्टूड है? अरे हम यहाँ पे रख देंगे ना इसकी वैल्यू, हमने किसकी वैल्यू चाहिए ए आई, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर ई आई ऑलरेडी अकर्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, हमने पुट कर दी वैल्यू. नाउ पुट द वैल्यू, देन आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई वेयर ए ऑलरेडी अकर्स इक्वल्स टू, नाउ ए इसकी भी वैल्यू पुट कर दें ए into a where ai occur into probability of ei upon summation of probability of a where ei occur into probability of ei. Okay, now we will do a question. Okay, यहां से आपको समझ में आएगा. सिंपली आपको क्या करना है, आपसे कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है व्हाट इज बायस थ्योरम, और उसका आपको फॉर्मूला ये लिख देना, दिस इज योर फॉर्मूला. अंडरस्टूड? अगर आपसे पूछता है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और यहां से आपका क्वेश्चन अप्लाई करना. नाउ अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आए. Two players A and B participate in game of throwing two dice. The first player who gets the sum of two dice with 7 awarded the prize. If A starts the game, find the probability of winning it. It's not a question of dice theorem. I think मैंने कोई किसी दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन लिख लिया है, उसको आप कर लो, फिर बाद में हम इसको बाद में करेंगे. ठीक है, इसको बाद में करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पहले करते हैं बायस थ्योरम का. Box A contains 6 red balls, box 4 white blue balls. Understood? Box A contains 6 red, 4 blue balls. Box B contains 3 red, 7 blue balls. 2 balls are drawn at random from box A and transferred into box B. Now a ball is drawn at random from box B. Find the probability of blue ball. Means आपको क्या करना है, you have taken a 2 box. Box A and box B. Box A contains, just look at this one. This is the 2 box. This is box A. This one is box B. Box A contains. सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉक्स, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आप बॉक्स A में कितनी रेड हैं, बॉक्स B में कितनी ब्लू हैं, आप उस पर बाद में कंफ्यूज हो जाते हो. तो आप क्या करना, सिंपली आप बॉक्स बना लो. अंडरस्टूड है? आप यू ड्रॉ द फर्स्ट बॉक्स, आप बना लो एक बॉक्स सिंपल वे में. बॉक्स A, दिस वन इज बॉक्स B. Box A contain 6 red, तो red को मैंने R से डिनोट किया, that is 6 red. Box B contain 4 blue balls, तो blue को मैंने BL से डिनोट किया है, that is 4 blue balls. Understood? Okay. Box B contains 3 red balls and box blue 7 blue balls. Understood? Means box A contains total number of 10 balls. Box B contains 10 total number of 10 balls. Okay. Now I have to draw 2 balls from box A and transferred into box B, and then draw at 1 ball from box B, and that ball will be blue ball. इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है. क्वेश्चन समझ में आया? सिंपली क्या करना है, हमें बॉक्स A से 2 बॉल ड्रॉ करनी है, उसको पुट करना है बॉक्स B में, और बॉक्स B से 1 बॉल ड्रॉ करनी है, और उस बॉल के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अंडरस्टूड है? ओके, नाउ वी हैव टेक द फर्स्ट even event because there are 3 events ना. अगर मैंने 2 बॉल ड्रॉ करी, मैंने नहीं देखा क्या है, अगर मैंने 2 बॉल ड्रॉ करी तो मे भी हो सकता है कि 2 रेड बॉल आ जाए, या तो हो सकता है 2 ब्लू बॉल्स आ जाए, या तो एक कंडीशन और सकती है कि एक रेड आ जाए और एक ब्लू आ जाए. अंडरस्टूड है? तो ये 3 कंडीशन हो सकती है. तो आई हैव टेकन even is a event 2 red balls drawn from box A. Understood? This event is called even. E2 is an event 2 blue balls drawn from box A. दूसरा एक ही ये हो सकता है ना. पहला क्या हो सकता है कि एक 2 रेड बॉल ड्रॉ हो जाए बॉक्स A से. दूसरा क्या हो सकता है सर, दूसरा ये हो सकता है कि 2 ब्लू बॉल्स आ जाए. थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड इवेंट हो सकता है कि एक रेड और एक ब्लू बॉल आ जाए. ठीक है, बॉक्स A से. और
किस में जाए, बॉक्स बी में। तो पहले बॉक्स ए की से 2 रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 6 रेड बॉल। तो हाउ कैन आई फाइंड 6C2 and total number of balls 10, so I have found 10C2 means 6C2 by 10C2. When we solving 6C2, so 6C2 can be written as 6 into 5 upon 2, then 6 set 2 cancel out, then answer will be 3 into 5, that is 15 upon 10C2, that is 10 into 9, 8 factorial cancel out upon 2, that means 5 into 9, that is 45, then 15 and 45 cancel out, then answer will be 1 by 3. Now look at this one. Now second event is denoted by E2, and that event is equals to 2 blue balls drawn from box A. If I draw two blue balls drawn from box B, sorry, box A, then probability of E2, how many blue balls are there, 4 blue balls, then 4C2 upon 10C2, then 4C2 can be written as 4 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial, 2 factorial cancel out, then answer will be, this is your, I think 4C2, 2 factorial cancel out, then just a minute, 4C2 can be written as 4 factorial into 3 upon 2 factorial into 0 factorial, that is 0, sorry, 2 factorial, sorry, say it, it's correct, then 6 upon 45, and PE3, that means 1 red ball and 1 blue ball. If I draw 1 red ball, how many red balls are there, 6 red balls. So how can I draw 6C1 and 4C1, so 6C1 into 4C1 upon 10C2, when the 6C1 की value 6, 4C1 की value 4 upon 10C2, that means 10 into 9 by 2, that means 5 into 9, that is 45. You can solve it, 10C2 आप solve कर लेना, sir 45 आएगा, then answer will be 24 upon 45. Now what is my question? Now again repeat the question, means 2 balls are drawn from box at random from box A, यहां तक क्वेश्चन हो गया, and transferred into box B. Now a ball is drawn at random, means अब ट्रांसफर करना है बॉक्स बी में. अच्छा, मैंने अगर ये ट्रांसफर करा, अगर ये पहला इवेंट अकर कर गया, आप बताओ, अगर पहला इवेंट अकर कर गया, दैट मीन्स 2 रेड बॉल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू बॉक्स बी, देन number of red balls, just look at this one. Okay, I have not taken another figure. Okay, so no problem. Number of, if I transfer 2 red balls from box A to box B, तो number of red balls कितनी है इसमें, 3 है. If I transfer 2 red balls, तो कितनी हो जाएंगी, 5, और ये ब्लू कितनी है, 7, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी, 12. अब जस्ट लुक एट दिस वन, 2 रेड बॉल्स, और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लू बॉल की. तो ब्लू बॉल इफ E1 occur first, if probability of blue balls if E1 occur first, so how many blue balls, 7 blue balls, up 7C1 upon 12C1. If I transfer 2 blue balls, so transfer 2 blue balls, so how many number of blue balls in box B, red balls are 3 and blue balls are 9, and total 9 plus 3, that is 12. Understood? The answer will be 9 by 12. Now if I transfer the third event, if I transferred 1 red and 1 blue, if I 1 red 1 blue, and 1 red 3 plus 1, that is 4, and 1 blue 7 plus 1, that is 8, so total number of ball 12, then blue probability of blue balls, if third E3 occur first, then 8 by 12, then answer will be 2 by 3. Now probability of blue balls is equals to probability of blue balls where E1 occur first into probability of E1 plus probability of blue balls where E2 occur first into probability of E2 plus probability of blue balls where E3 occur first into probability of E3. So probability of blue balls where E1 occur first, what is the probability of blue balls where E1 occur first, that is 7 by 12. Now put the value, 7 by 12 into probability of E1, what is the probability of E1, just look at this one, this is 1 by 3, and 7 by 12 into 1 by 3 plus probability of blue ball where E2 occur first into probability of E2, then 9 by 12 into 2 by 15, then probability of blue ball
where E3 occur first, that is 2 by 3, probability of E3, that is 8 by 15. Now, this is 7 by 36, plus when we cancel out 9 से up एक बार cancel करो, that will be 5, okay, then आप 2 से इसे कर सको 6, फिर 3 cancel, then answer will be 10 आ जाएगा, 5 into 10, 2, 10 आ जाएगा, 10, तो 3 by 30, then 1 by 10, understood है, 16 by 45. Now, अगर मैंने LCM लिया, this is 36, तो LCM क्या होगा, this one is 90, तो 41 upon 90, ओके okay? अगर मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व किया, दैट मींस आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका एलसीएम आएगा आपका 180 एलसीएम, देन 35 प्लस 82, दैट इज 117 अपॉन 180. सिंपली आपको करना है, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट वर्क है आपका कि बॉक्स बनाओ, तो देन आप उसको रेड बॉल्स कितनी है, ब्लू बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी लिख लो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आल्सो दैट. Then we transfer 2 balls, आप एक ड्रा करो, then transferred into this one. आपसे इससे क्या होगा, क्वेश्चन में जो मिस्टेक्स होती हैं वो कम होंगी. अंडरस्टूड है? नाउ a question, another question, a player is speaking truth 4 out of 7 times. अच्छा ये बताओ, अगर ट्रूथ बोलता है तो हाउ 4 out of 7 times, then probability of truth कितनी हो गई, 4 by 7, and false की लायर होगा तो false या लाई तो 3 by 7. A card is drawn from the pack of 52 cards. Means आपका well shuffled card है, 52 cards का pack है. Okay. If it reports that there is a diamond, how many diamonds are there? अगर आप एक 52 card का pack लेते हो तो there are 13 diamond. ठीक है, 4 colors are there, तो 13 diamonds are there. 13 diamonds are there. तो 13 diamonds, then probability of 13 diamond, 52 cards, that true, there is a true diamond. What is the probability that actually there is a diamond? Means एक केस ये भी हो सकता है, that means कि वो पहली बात तो ट्रूथ और लायर दोनों हो सकता है. अगर 52 कार्ड्स का एक पैक है तो डायमंड के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बट उस समय अगर वो डायमंड है तो वो क्या बोले, ट्रूथ. बट मे बी अगर वो डायमंड है तो वो फॉल्स भी बोल सकता है या लायर भी बोल सकता है, तब वो गलत हो जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन कंसीडर करनी होगी. Okay, now look at this one. Probability of truth is equals to 4 by 7, because 4 truth out of 7 times, that means total number of events are 7 and favorable event 4, तो 4 by 7. तो probability of liar क्या होगा, आप इसको F से या L से डिनोट करोगे, यहाँ L से किया तो आप इसको भी L से करिएगा. अंडरस्टूड है? यहाँ पे थोड़ा सा ये वो हो गया. तो P of L is equals to 3 by 7, because 1 minus 4 by 7, that is equals to 3 by 7. Got it? Okay, now probability of diamond where is speaking truth, that is 3 by 52, that is 1 by 4. अगर डायमंड है तो ट्रूथ बोले तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 by 52, that is 1 by 4. now probability of diamond where is speaking liar, ना आप बताओ, अगर डायमंड था और ट्रूथ बोला तो 1 by 4, डायमंड था लाई बोले that is 1 minus 1 by 4, that answer will be 3 by 4. now got it? now again, probability of diamond, that means probability of diamond, the probability of diamond where talking truth, probability of diamond where talking liar. Understood है? तो 4 by 7 into 1 by 4, 3 by 4 into 3 by 7. now when we simplifying this one, 4 cancel out, then answer will be 1 by 7, 3 3 to 9, that is 9 by 28, and we solving this one, that is answer will be 13 by 28. then probability of means he's saying he's telling truth, and he, what is the probability that actually there is a diamond, means पहले तो डायमंड हो जाए, पहले तो डायमंड अकर करेगा, देन वो ट्रुथ बोलेगा ना, means he is actually the diamond. that means तो 4 by 7 into 1 by 4 upon 7, 13 by 28, then answer will be 4 by 13. now in previous we have taken a question, that is this one. okay, two players A and B participate in game of throwing 2 dice. The first player who gets the sum of 2 dice is 7 awarded the prize. If A starts the game, find the probability of winning A. Sum of 2 dice is 7. If I'm saying sum of 2 dice are 7, that means if first dice will be 1, then second dice must be 6. ये events हो सकती है either 1 6, either 6 1, or 2 5, or 5 2,
or 4 3 or 3 4. Any other event means अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 36 होगा, बिकॉज 2 डाइस है, एक डाइस में 6 इवेंट, तो 2 डाइस में 36 इवेंट, बिकॉज 6 के पावर 2. अंडरस्टूड है. अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो दिस इज योर सैंपल स्पेस एंड टेकिंग 1 6 6 1 2 5 5 2 4 3 3 4. Now probability of winning, if I'm saying he awarded the prize if sum of dice is 7, then win करने की probability that is 6 by 36, then 1 by 6. If I'm saying probability of winning of A, that means 1 by 6, then losing of A, that is 5 by 6. Winning A means he's saying find the probability of winning A. अगर ये प्रोसेस है, that means अगर 2 डाइस को 2 पर्सन्स हैं A and B, if I'm saying अगर A को ही जीतना है, that means अगर A ने पहली बार ही चला, that means if you are 2 students, तो एक का नाम A, दूसरे का नाम B, तो अगर आप डाइस से खेलते हो तो सम ऑफ डाइस का नंबर जो होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 by 6 है, लॉस की प्रोबेबिलिटी 1 - 1 by 6. अंडरस्टूड है. अच्छा आप बताओ, अगर A को विन करना है, A ने पहली बार फेंका, दैट मींस या तो पहले बार में ही सम ऑफ 2 डाइस 7 आ जाए तो वो जीत जाएगा. मान लो अगर पहली बार में नहीं आया तो वो हारेगा. तो दूसरी बार अगर A को ही जीतना है तो B को भी हारना होगा. अंडरस्टूड है. अगर मैं कहता हूं कि या तो पहली बार में A जीत जाए, या तो कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं सिर्फ A को ही जीतना है, दैट मींस अगर A को जीतना है या तो पहली बार में जीतना है, अगर पहली बार में नहीं जीता तो यानी कि ये हारा, तो इसका मतलब दूसरा टाइम कौन चलेगा? B. फिर इसे थर्ड टाइम में जीत सकता है. अंडरस्टूड. अगर थर्ड टाइम भी नहीं जीता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हारेगा. तो फर्स्ट में A हारेगा, सेकंड में B हारेगा, थर्ड में A हारेगा, फिर फोर्थ में B हारेगा, देन फिफ्थ में जीतेगा, देन सेवेंथ में जीतेगा, देन नाइन्थ में जीतेगा. अंडरस्टूड है. अच्छा आप बताओ, विनिंग ऑफ A दैट मींस 1 by 6 हो जाए, मींस एनी ऑफ द इवेंट अकर, मींस आइदर फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम और सेवेंथ टाइम, एनी ऑफ द इवेंट अकर, दैट इज 1 by 6 प्लस 5 by 6 का स्क्वायर. हाउ कैन ही टेकन द स्क्वायर? बिकॉज़ A हारे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 by 6. B हारे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 by 6. दैट मींस 5 by 6 का होल स्क्वायर इनटू 1 by 6 प्लस 5 by 6 का होल 4 इनटू 1 by 6 and continue infinite टाइम्स तक चलेगा. So because we know that the sum of infinite series, that is P plus Q, P plus P into Q square, P plus Q plus P into Q के power 4 and so on. तो first term P and R common receive, that is Q square, that is P upon 1 minus Q square. Understood? Then 1 by 6 upon 1 minus 5 by 6 the whole square. Then answer will be winning of A, that is 6 by 11. Got it? Okay. Now let's restart another topic, that is random variable. It's most important topic because when we discuss this topic, after this one we will discuss the discrete random variable, then we will discuss the continuous random variable. I have discussed continuous random variable, but now then what is random variable? Random variable is nothing, it's like a function. Okay, it's like a function or rule something. Means जैसे आप function पढ़ते हो ना कि f such that x to y or f such that x to real number, तो it's a function like that one. Okay, when probability के respect में बात करते हैं, then it's called a random variable. अब इसकी definition देखते हैं. Because in examination, MDU examination, they ask what is a random variable, what is random one dimensional random variable, what is two dimensional random variable. 2.5 marks का एक question आता है. Understood है? Okay, then we will start. Connecting the outcomes of an experiment with real values is known as random variable. What is random variable? Connecting the outcomes of an experiment with real values is known as a random variable. बस आपको इतनी ही definition लिखनी है. It is a rule to assign real number to the outcome is known as one-dimensional random variable, and the corresponding data is called univariate data. Understood? अब 2.5 मार्क्स में 3-4 लाइंस आप लिख देना तो मार्क्स थोड़ा सा इजी वे में मिल जाता है. Now, two-dimensional random variable. If anybody asks what is two-dimensional random variable, so connecting two outcomes at a time to the real values, provided those two outcomes are drawn from sample space and corresponding data is known as bivariate data. Understood? Now,
Random variable are two type, either discrete random variable or continuous random variable. Discrete random variable, in this one probability mass function are this can be noted as PMF or distribution function. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन यूज करता है दैट इज पी ऑफ एक्स, उसको हम करते हैं पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में दो मेथड्स होते हैं, वन इज बाइनोमियल मेथड, अनदर वन इज Poisson method. These are most important methods. Okay, now in continuous random variable, in continuous random variable, now another one is continuous random variable. Continuous random variable is a function f of x which is called probability density function. Now another one, some methods are there, normal distribution function, uniform distribution function, exponential distribution function. Understood? Random process, random variable along with random time, random variable along with time domain is called random process. Now a term is called expectation. It is actually the mean in the probability distribution. Expectation of x is equals to sigma xi into p of xi. Sometimes this is called sigma xi into pi, where x is a discrete random variable. X bar is equals to sigma xi into pi upon sigma pi. Sigma x bar is equals to sigma xi into sigma pi, sigma xi into pi upon sigma pi. X bar is equals to sigma xi into pi upon sigma pi की वैल्यू क्या होगी, that is 1. तो expectation of x is equals to x bar is equal to sigma xi pi. Now variance x sigma square is equals to 1 upon n sigma fi xi square minus 1 upon n sigma 1 upon n, because we know that the sigma expectation of x square minus expectation of x का whole square. तो expectation of x square की वैल्यू क्या होगी, that is sigma pi into xi का square minus sigma pi xi का whole square. Then sigma square is equals to expectation of x square minus expectation of x का whole square. This is also known as sigma square equal to expectation of x minus x bar का whole square. Okay, now today we have discussed three things. First we discuss Bayes theorem. Bayes theorem का हमें प्रूफ लिखना होगा. प्रूफ आपके सिलेबस में आता नहीं, एग्जामिनेशन में नहीं आता. ओके, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर लगाना. बायस थ्योरम का एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड इनफाइनाइट सीरीज का भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड रैंडम वेरिएबल, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एंड random process, expectation and variance. In next lecture we will discuss some examples of random some properties of random variables. Then we will discuss some the PMF key properties. Then we will discuss variance key properties of variance also. Okay, or some questions of expectation. One important thing, expectation of x is called average or mean. अंडरस्टूड है? हमने जैसे देखा ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को कैसे दिखाते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, इसको एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, जिसको मीन कहते हैं या एवरेज बोलते हैं. अंडरस्टूड है? नाउ ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.